चलिए, so we are learning moment of inertia of continuous bodies. इसमें we learn till rectangular plate, right? Today, let's learn it for a hollow sphere. Please pay attention, huh? Hollow sphere. So it is moment of inertia of a hollow sphere about one of its diameter. सर आप म्यूट हो। ठीक है? Please pay attention. How do we do it? So we have this hollow sphere. ठीक है? And this is the diameter about which we want to find its moment of inertia. So the element which we will choose here, the element which we choose here is a ring. Which is obviously, you can see here that it is coaxial with the cylinder. Can you see this? Sorry, with the Yes, sir. sphere, right? So if I shade it, तो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना? ये रिंग आएगा बेटा, रिंग ही रहेगा ना, ये डिस्क टाइप का नहीं होगा, है ना? Yes. क्योंकि अंदर से तो ये हॉलो है. तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू द मास ऑफ द hollow sphere is capital M, its radius is A. Okay, what will be sigma? Sigma is M upon 4 pi A square. Okay, ये है तुम्हारा रिंग का width. So we are taking at an angle theta from the horizontal. We are taking a small increment in theta, which is d theta, and this length is, the width is a d theta. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. This radius is, the radius of the ring is, let's write it as small r. So this small r is equal to a cos theta. Yes or no, all of you? Yes, sir. Right? It's a cos theta. So what is the, see, we want to find what is the mass of this ring. We want to find what is the mass of the ring, dm. So dm will be 2 pi r, that is the circumference of the ring, multiplied by the width of the ring, which is a d theta. Yes or no? Hello. सर Yes, sir. हाँ बोलो वो वैष्णवी. सर ये DM M/4 पाई A स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होगा?
अच्छा, ये तो अभी एरिया हुआ ना बेटा, हाँ, एरिया नहीं को सर वो डी। मल्टीप्लाई करोगी सिग्मा से। बिल्कुल सही है, हाँ। सही बोल रही हो तुम। सो दिस इज m अपॉन 4 pi a। So these two cancelled out. This is 2. So this is m by 2 cos theta d theta. This is dm. I hope all of you understood this. Yes or no? यस सर। Now, moment of inertia of this ring about the axis is dm into again r square. So this is m by 2. क्या मिला मुझे? Cos theta d theta into cos square theta. Now, to integrate, either I can use the formula for cos cube theta, or what I will do here is I will write cos square theta as 1 minus sin square theta. सर हाँ बोलो। इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा। बिल्कुल आए, तुम आज सही, एकदम सही है, वेरी गुड। सो इट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं भूल गया था, ठीक है, इसको ठीक कर लें। सो दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 2। कॉस थीटा डी थीटा को हम क्या लिखेंगे, दोनों को अलग अलग से कर लो। कॉस थीटा डी थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज डी आई, ठीक है, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू आई। सो आई इज एम ए स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या होगा इसका? लिमिट विल बी फ्रॉम, द लिमिट्स ऑफ दिस विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 to plus pi by 2, so that the entire sphere will be covered. This is zero axis, right? तो इसके नीचे यहां तक जाएगा ये, और ऊपर यहां तक जाएगा, है ना? So that is from minus pi by 2 to plus pi by 2. So this is cos theta का इंटीग्रल क्या होगा भाई? माइनस साइन थीटा, नहीं इट्स प्लस साइन थीटा ना, इट्स प्लस साइन थीटा माइनस इट विल बी साइन क्यूब थीटा अपॉन 3। I hope all of you understood this. Yes or no? All of you understood the sine cube theta or no? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Any doubts? Vaishnavi, you understood sine cube theta d theta? Vaishnavi? अच्छा है ही नहीं. So this is minus pi by 2 to plus pi by 2. Now substitute the values. Its sine pi by 2 is 1. फिर पहले pi by 2 ही substitute कर रहा हूँ. Minus 1 by 3. Minus sine of minus pi by 2 is minus 1. This is plus 1 by 3. Right? तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज एम ए स्क्वेयर बाई 2, इट्स 2 minus 2 by 3. So from here I get 2 by 3 m a square. I hope all of you did understood this. Yes or no? Yes, This is sir. the result. So moment of inertia of a hollow sphere is about any of its diameter is 2 by 3 m a square. If you have any doubts, please ask. If you don't have any doubts, we'll move ahead. Write it quickly.
नोट कर लें आप लोग तो बताइए मुझे, ठीक है? सर लिख लिया। ओके सर ओके, आरुष, दिया, इफ यू आर राइटिंग। आरुष, नोट कर लिया बेटा? सर लिख रहा हूँ। डन सर। डन सर। चलो, so now it's time for finding the moment of inertia of a solid sphere about one of its diameter. So, see, in hollow sphere, we took the element as ring, right? In solid sphere, we will take the element as, so this is a solid sphere. Here, we will take the hollow sphere as a element, because now we know the moment of inertia of hollow sphere, right? So mass is capital M, radius is A. So we have the hollow sphere. This is the hollow sphere of some thickness, right? And its radius is R and its thickness is dr. Its radius is R and its thickness is dr. Okay. So what is rho here? Rho is mass per unit volume. So it is m by 3, m upon 4 by 3 pi a cube. Thickness क्या है इसका? Thickness is the volume of the region is, जो white portion है वो क्या हो जाएगा? It will be 4 pi r square dr. This is dv. What about mass of it? It's rho into dv. This is 3m upon 4 pi a cube into 4 pi r square dr. This cancelled out. So we have 3m into r square dr upon a cube. This is dm. Now, you know moment of inertia of this hollow sphere now. What is di now? Di is 2 by 3 dm into r square. What is dm here? Dm is 3m r square dr upon a cube into r square. 3 cancelled out. We are left with 2 capital M by a cube into r power 4 dr. This will be integrated from 0 to r to give us capital I. I hope all of you understood this. Yes or no? यस सर। Sir, it will be integrated from 0 to 8. Hmm.
0 to A. So this is 2 by 5 MA cube. क्लियर है ये सबको? हाँ ना बोलो। यस सर। चलिए हम लिखिए नीचे जल्दी से इसको है। तो हाँ बोलो। एम ए स्क्वायर होगा ना। हाँ आज कुछ तो है। दिस इज MA स्क्वायर, 2 by 5 MA स्क्वायर। ठीक है। Now, since these axes are passing through the center of mass of these objects, we can also call this as moment of inertia of the object about an axis passing through its center of mass. लिखो। सर बोलो। सर जो वेक्टर का जो टेस्ट होना है उसमें मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम है? 1 घंटे का टेस्ट। और सर कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 से 30 क्वेश्चन रहे। ओके। Done, all of you? Noted? यस सर। चलो। So this was solid sphere. ठीक है। चलो let's learn about theorems on moment of inertia. Theorems on moment of inertia. So first theorem is
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है इसका मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरम is valid for any object, right? Whether it is one dimensional or two dimensional or three dimensional. ठीक है? तो इसका क्या मतलब होता है? कैसे यूज करते हैं? हाउ डू वी यूज इट? So we have this object of any shape you can take, and let's say this is its center of mass. ठीक है? So this is the axis passing through its center of mass, right? And we know the moment of inertia about this axis. So this is a must, right? You should be aware of this value. So if this is not known, or I'll write it here, it is necessary to know the moment of inertia about center of mass to apply parallel axis theorem. ठीक है? Now, we want to find moment of inertia about an axis which is parallel to this line, parallel to this axis. So here, let's call these lines as, let's name this point as, this line as 1, 1, and this line as 2, 2. So line 1, 1 is parallel to line 2, 2. Understood? Hello? Yes, sir. Then only you can use this. ठीक है? So the distance between the two lines is d, and mass of the object is capital M. So moment of inertia about the second line, I22, is equal to ICM plus md square. If the lines are not parallel, if line L22 is not parallel to the line or the axis, even though we know ICM, then also you can't apply it. For example, if I have this axis, I want to find moment of inertia about this axis, right? Can I use this method? No, I can't, because these two lines are not parallel to each other. There is no fixed d between them. Understood? Hello? Yes, sir. अगर तुम्हें मान लो ये दिया हुआ है, this is again some ICM, right? Some I dash CM ले लो, तो you can definitely find moment of inertia about this axis, which is parallel to these two. Understood? Yes or no? Yes, sir. I about this is, I dash about this is I dash CM plus M D1 square. क्लियर है सबको? हाँ ना बोलिए, Yes. नोट करिए इसको.
सर लिख लिया। चलो, so this was, all of you noted this? नो सर। Please type done when you are done, okay? सर बोलो। सर एक डाउट था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। बोलो। सर बुक में जो डेरिवेशन दिया है वो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया, बोलो। सर उन्होंने आई को जो सेकंड वाला आई है I22 उसका ये दिया है, तो क्या बोलता चला, डेरिवेशन दिया है और फिर लिखा है MXCM इज इक्वल टू 0। वो क्यों हुआ ये नहीं समझ में आया मुझे। हम्म, हाँ सर इधर। ये ना, हाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही जब मास को रख दोगी और उसी के अबाउट घुमाओगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम, याद है हम लोगों ने ये पढ़ा था जब हम लोग वो कर रहे थे क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। ये वही है कि नहीं है, MIXI, यू राइटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओनली ना, ओ याद आया? ओके। हाँ मेक सेंस, समझा सर। हम्म। थैंक यू। All of you noted this, the whiteboard? यस सर। यस सर। Okay. So then comes the next theorem. It is perpendicular axis theorem. So is valid only when is valid only for planar bodies. What are planar bodies? Arush, what are planar bodies? 2D। Yes, which lies in a plane, right? तो यहाँ पे क्या होता है,
Suppose this is a planar body. Okay. And the body lies in this XY plane. मान लेते हैं this is this is x axis and this is y axis. ठीक है. This body lies in this XY plane. ठीक है. This is x axis, this is y axis. And so we are aware that the body lies in the XY plane. Okay. And we are aware about IXX and IY. This is known to us. Okay. IXX and IYY are known to us. Now, so the body is coplanar with XY plane, and we know the moment of inertia about any two axes on the XY plane, any two axes in the XY plane, but which are perpendicular to each other. In this case, we are taking the moment of inertia about IXX, about x-axis and y-axis. I hope all of you understood this. This is, till this point, we are aware about. Yes or no? These are the Yes. given conditions. Yes. Shabash. So now, if you want to find moment of inertia about this axis is an axis which is passing through the point of intersection of xy axis and it is perpendicular to the other two axes. So IZZ will then be equal to IXX plus IY. सर हाँ बोलो. सर -x -y -z नहीं लेंगे क्योंकि xy है तो -x -y मैं समझ रहा -x -y. सर क्योंकि अरे वो नॉर्मल एक्स एक्सिस, मैं एक्सिस की यस बात सर कर रहा हूँ. वो एक्स एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता अच्छा है ना. मैं अच्छा वहां सर पे कोऑर्डिनेट नहीं लिखने जा रहा. अच्छा सर ठीक है. तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है, आई विल राइट द कंडीशंस हियर. सो द फर्स्ट कंडीशन इज, सो द फर्स्ट कंडीशन इज ऑब्जेक्ट प्लेनर होना चाहिए. ये तो पता चल गया मुझे. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट is known about any two perpendicular axes which are coplanar with the object. ठीक है. ये मालूम होना चाहिए. सेकेंड, the moment of inertia of the object about an axis perpendicular to the object and obviously when it is perpendicular to the object, it is perpendicular to both the axes also, is given as the sum of the moment of inertias of the moment of inertias about the coplanar axis which is
which are perpendicular to each other. I am writing already given. ये समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? हाँ ना बोलिए। Yes. ओके सर। हाँ बोलो। ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये हम्म अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास होने चाहिए या जरूरी नहीं। कंपल्सरी? थैंक यू। Done, sir. एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, मोस्टली ये सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ठीक है, मोस्टली। पर इन केस अगर, सी ऑल थ्री ऑफ देम शुड पास थ्रू द सेम पॉइंट, ये फिक्स है। बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेंटर ऑफ मास से पास होगा। पर अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आई एक्स एंड आई वाई अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वहां तक पहुंचाएंगे एंड देन वी विल फाइंड आई जेड। अंडरस्टूड? देखो चलो, so let's learn to apply this. So this is a rectangular plate, right? This is B, this is L. लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने। This is y axis, this is x axis, ठीक है। This is B, this is L, mass is capital M. इसके अबाउट क्या हो जाएगा? Let's say this is I, Y, Y. This will be M L square by 12. This is I, X, X. This is M B square by 12. I hope all of you understood this. This is I, Z, Z. And this is M by 12, B square plus L square.
ठीक है. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This came from Ixx plus Iy. लिख लीजिए इसको. If you have noted it, please type done. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसका भी एक एग्जांपल देख. सॉलिड स्फीयर निकाला ना तुमने आज. सॉलिड स्फीयर का क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर. So you know ICM now for this solid sphere? Yes or no? Yes, sir. ICM is 2 by 5 ma square. Suppose करो you want to find moment of inertia about any of its tangent. This is I. So this length is how much? This is R. Mass is M. इसको R लिख लो और M को कैपिटल M. So I is ICM plus capital M R square. So this is 2 by 5 mr square plus mr square, or this is 7 by 5 mr square. This is I. Clear? इसके अबाउट I निकालना. Yes, sir. नोट करिए इसको.
Noted? Yes, sir. Okay. बस देखें तो क्या है। मैंने तुम लोग को ये सब होमवर्क में दिया था क्या? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया ना तुमको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 करो। सॉल्व एग्जांपल दिख रहा है सामने ये? Yes, sir. अरे ये कौन ये माइक मत ऐसे करो। क्वेश्चन नंबर 4, डिड वी डू दिस क्वेश्चन नंबर 8 9 किया था क्या तुम लोगों Worked out ने? examples नहीं किए थे हमने सर. किया था ना 8 और 9? No, sir. Worked out examples नहीं किए थे. अच्छा तो करो इसको 8 और 9 को भी। और क्या करोगे? इधर तो कुछ नहीं दिखता है क्या मुझे? इसको छोड़ दो। उतना करो सॉल्व एग्जांपल्स में, फिर इधर आ जाओ। ऑब्जेक्टिव 1 2 तो जितना करता कर सकते हो करो। ऑब्जेक्टिव्स करना जरूर बेटा, हाँ छोड़ना मत। फिर इधर जो है मैंने तुम्हें कहाँ तक दिया था? और 1 से 10 तक, फिर 1 से 21 तक। ठीक है, उसमें बीच में बहुत सारे सॉल्व किए। हाँ कर चुके हो, पर अब बाकी कर लेना जितने बचे तुम्हारे। हाँ, 1 से 20 तक। वन से 20 क्यों करोगे तुम? करो 1 से लेके 30 तक, नॉट 30। करो 20 तक ही करो। 1 से 20। इधर ये किया था क्या तुम लोगों ने? 41। Yes, sir. 40 से 45 तक। 45 पे रखा है. 41 से 45 तक किया था। Yes, sir. हाँ सर। सब सॉल्व कर लिया था? किया 40 तो to नहीं है 45. तुमने, पक्का मुझे तो पता है। सर मैंने किया है सर. डाउट।